Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hi to all again. So in this class we discuss about another important theory of psychology, and that is theory of cognitive development by Jean Piaget. So before we start our class, there is a very interesting story about Jean Piaget. That is, actually Jean Piaget was appointed as a translator in B.Ed psychological lab, and his duty is to translate the English version to French version. Okay. But at that time, he found, or he had a curiosity to know about the different thinking level of different students or individuals about their logical thinking. And from that curiosity, he experimented many individuals, and after that, he found a new type of cognitive development process, or the process which are not notable by everyone. Okay. तो सेही कथाटा को जीन पियाजे नोट कले आउ से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो थ्योरी को देले तो एठी तो से गुटे प्रथमे काम करथुले कोठी जोठी हमर बिनेड इंटेलिजेंस लैब रे से काम करथुले एज ए ट्रांसलेटर किंतु तापरे लेटर पीरियड ऑफ लाइफ रे से गुटे साइकोलॉजिस्ट आउ जो साइकोलॉजिस्ट कर थ्योरी वेरी इंपोर्टेंट जो आमे जानि जंती जे विभिन्न एग्जाम प्रोस्पेक्ट रे हो बा एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव रे हो जीन पियाजेंकर कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल आ बहुत प्रोडक्टिव मैनर रे आमे यूज भी करंती तो सेही जीन पियाजेंकर जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ताकू आमे आज हम क्लास रे डिस्कशन करबा आ बुझिबा व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच आर गिवन बाय जीन पियाजे. ओके, एंड आल्सो द थ्योरी is also otherly considered as the cognitive development also, and it is also known as the constructivism or cognitive constructivism theory. तो ए थ्योरी को आमे डिस्कशन करिबा केमिति पिलांकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होउची को स्टेज रे होउची से बाबद रे डिस्कशन ए क्लास रे होबो. आउ ए क्लास रे कोन डिस्कशन होबो ना डिफरेंट इंपोर्टेंट कांसेप्ट जोटा कि बुझिले आमे जो डेवलपमेंट आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होउची से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम क्लैरिफाई करि परिबा आउ लास्ट रे हमें इम्प्लिकेशन देखिबा हम क्लासरूम जनरल क्लासरूम सिचुएशन ले हम केमिता को इम्प्लाई करंती. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर अनदर टॉपिक, जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट द इंटेलिजेंस चेंजेस इन चिल्ड्रेन ग्रो. तो जिते पिला बढ़िबो तार इंटेलिजेंस रे चेंजेस आसे, आमे नुआ नुआ जिंस आम पाखे आसे नुआ नुआ कथा आमे डेवलप करू तो से प्रोसेसटा गोटे सिस्टमेटिक वे रे जाय बोली जीन पियाजेंकर कांसेप्ट रहिला. ए चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज, जे केवल नॉलेज को एक्वायर करिबा ता नहे. द चाइल्ड हैज टू डेवलप और कंस्ट्रक्ट ए मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. तो ता वे रे से जो वर्ल्ड टा को देखुची परसीव करूची से वर्ल्ड को से केमिति आणुची ता माइंड रे केमिति से कंस्ट्रक्ट करूची नुआ नुआ इमेज नुआ नुआ कांसेप्ट नुआ नुआ इंफॉर्मेशन से प्रोसेस टा को जीन पियाजे तांकर डेवलपमेंट प्रोसेस रे देले. तो सेहित पई ए थ्योरी टी को भी जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी भी आमे बेले बेले कहू. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट occurs through the interaction of innate capacities and environmental events. सो जो कॉग्निटिव प्रोसेस रो डेवलपमेंट हुए दैट इज ड्यू टू टू फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज innate capability जोटा आम भितर अच्छी, एंड ऑल्सो द एनवायरमेंटल इवेंट जोटा आम सराउंडिंग रे अच्छी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. एंड चिल्ड्रेन पास थ्रू ए सीरीज ऑफ stages. Every individual pass a series of stages, and in these stages we found different type of developmental processes are occur within the individuals. So here Binet define 4 stages of development. The first one is sensorimotor stage, that too birth to 2 years, then preoperational stage, that too 2 to 7 years, then concrete operational stage 7 to 11 years, formal operational stage age 12 to so on. So here in the process of development, Piaget added 4 stages, 4 important stages of life. These are
sensorimotor. Remember ए concept गुड़ा ए word गुड़ा को very much important बहुत जगह रे क्वेश्चन ले आसुची आउ विभिन्न एंट्रांस एग्जामिनेशन रे निश्चित भाव में 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन आसीबो तेणु विविडली और माइंडफुली देखिबा आ पढ़िबा भलो से कोन कोन कथा एथिरे अछि तो जेमति हम फर्स्ट टेस्ट को देखले सेंसरी मोटर सेकंड वन इज प्री ऑपरेशनल थर्ड वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ आवर लाइफ तो एई चारिटा स्टेज को वर्तमान हमें डिटेल रे डिस्कशन करिबा बिफोर दैट हियर इज अनदर कांसेप्ट दैट इज Jean Piaget's theory of cognitive development suggests that children move through 4 different stages of intellectual development, 4 stages of intellectual development which reflect the increasing sophistication of children's thought. Okay. तो ये जो विभिन्न स्टेज दे कि जते बेला हमें जिबा जते सीक्वेंशियली गुटे स्टेज को गुटे इंडिविजुअल क्रॉस करूची एट दैट टाइम वी फाउंड देयर आर डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर गॉट चेंज्ड एंड जो आमे आम थिंकिंग प्रोसेस आमे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ये सब जिनस रे केमिति चेंजेस आसुची ई चारिटा स्टेज को बुझिले आमे क्लैरिफाई हमरो आसी परिबो एंड ईच चाइल्ड गोस थ्रू द स्टेज इन द सेम ऑर्डर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इंटरैक्शंस विथ द एनवायरनमेंट ऑलरेडी ए बाबत हम डिस्कशन करचंदी जे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस रे जो आम लाइफ रे जाउची आमे आगु जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कांसेप्ट डिस्कशन करथुलु तो सेम प्रोसेस रे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सांगरे केमिति जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होउची गुटे पिलार जो थिंकिंग एबिलिटी डेवलपमेंट होउची ई सब जिंस जो डेवलपमेंट होउची केमिति डेवलपमेंट होउची ई चारिटा स्टेज रे आमे डिस्कशन करिवा तो इट गुटे वेरी मच इंपोर्टेंट कांसेप्ट ई जो चारिटा स्टेज कथा कुआ जाईची दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री रे जेहेतु हमर हेरिडिटरी बा जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री रे तमे डिफरेंट डिफरेंट पाइबो तो ताकू नेई की भी एटा को प्रूव करा हेची जे दीज 4 स्टेजेस आर फाउंड overall in our world. So that concept is, we consider that concept is a universal concept for the development. Okay. So एडी जो कथाटा कहिला सेंसरी मोटर जो स्टेज टा जो हमरो बर्थ टू 18 रु 24 मास पर्यंत जाए जोटा को हमें ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट प्रिमेनेंस बोली हमें ताको डिफाइन करू देन नेक्स्ट वन इज द प्री ऑपरेशनल एगुडा को हमें धीरे धीरे गोटे गोटे स्टेज को गोटे गोटे पार्ट रे हमें क्लियरली डिस्कशन करिवा डोंट वरी अबाउट इट तो सेटा 2 to 7 years old पर्यंत जीवो प्री ऑपरेशनल स्टेज दैट इज ए सिंबॉलिक थॉट कोन हम देखिबा डिस्कशन करिबा आगु द नेक्स्ट वन इज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज दैट स्टार्ट फ्रॉम एज 7 to 11 एंड दैट इज ए लॉजिकल थॉट स्टेज बोली हम कहंती लॉजिक बेस्ड थॉट सेते बेले पिलांको पाकु आसे देन नेक्स्ट वन लास्ट वन इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा को हम एडोलेसेंस टू एडल्टहुड पर्यंत जाए जो डेवलपमेंट हम जो जानि छ जे ग्रोथ बा डेवलपमेंट प्रोसेस रे जोटा ऑटमोस्ट पोजीशन ले थाई जोठी की डेवलपमेंटा गोटे सिचुएशन बा गोटे मैच्योरेशन कांसेप्ट को आसे तापर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और डेवलपमेंट किछि मात्रा रे चले तो सेते पर्यंत फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और सेठी साइंटिफिक रीजनिंग पिलांक पाखरे डेवलपमेंट हुए तो आमे एई कांसेप्ट गुडा को डिटेल रे वर्तमान हमें डिस्कशन करिया सो द फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज तो जेमिति वर्ड रु आमे ताकू देखि पारुचंती सेंसरी एंड मोटर जोटा कि जो स्टेज एज कथा हमें कहिथलु 0 to 2 years पर्यंत हमें इन जनरली ताकू डिफाइन करू तो सही समय रे पिलांकर को भलिया डेवलपमेंट हुए वर्तमान देखिबा तो बेसिकली तांकर जो सेंसरी आ मोटर जो कंबाइनली वर्क करंती से ई स्टेज रे बेसिकली देखा जाए सेंसरी विथ मोटर तो सेंसरी जोटा को हमें जानि जदी वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स sorry we have 5 sense organs तो सी सेंस ऑर्गन को यूज करी कि हमें केमिति मोटर एक्टिविटी करूचंती सेही प्रोसेस एठी डिस्कशन डिस्क्राइब करा हिची हमें एग्जांपल सह एठी डिस्कशन करिवा तो एज हमें जानि चंती बर्थ टू 2 years पर्यंत चलिबो द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेंसरी द फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज द इन्फेंट फोकसेस ऑन फिजिकल सेंसेशन टच मेनली बेसिकली टच सीइंग हियरिंग तो यही कॉन्सेप्ट उपरे पिलाटा कन्फाइंड ही रुहे और कॉन्सेप्ट उपरे ही तारो जो डेवलपमेंटा हुए एंड ऑन लर्निंग टू कोऑर्डिनेट हिज बॉडी तो शिखे से सेते बेले ता बॉडी जो विभिन्न सेंस ऑर्गन आ ता मोटर एक्टिविटी को केमिति कोऑर्डिनेट प्रोसेस रे से काम करिवो से कथा को से बुझे तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ए स्टेज रे देखिबा द फर्स्ट वन इज द इन्फेंट लर्न्स अबाउट द वर्ल्ड थ्रू their senses
and through their actions आमे देखि दिबा जते बेले ई 0 to 2 years जो एज रो इंडिविजुअल बा जो माने इन्फांट थांती सेमान को लक्ष्य करथिबो तो से माने विभिन्न जो तांको सराउंडिंग रे जो जिंस अछि ताकू से माने देखंती ऑब्जर्व करंती आउ माइन्यूटली ऑब्जर्व करंती विभिन्न प्रकार रो माने जो कोन तांको बिहेवियरटा केवल ऑब्जर्वेशन रे ही थाए ओके सो हियर मूविंग अराउंड द एक्सप्लोरिंग देयर एनवायरनमेंट तो जेहेतु बिफोर दैट दे आर एट देयर मदर्स वूम्ब आउ सडनली से माने बाहर को आसिले तो ये जो आउटसाइड वर्ल्ड तो से आउटसाइड वर्ल्ड को से माने परसीव करंती थ्रू द सेंस ऑर्गन then during the sensorimotor stage a range of cognitive ability developed a range of cognitive abilities developed these includes object prominence self recognition the child realized that other people are separate from them okay तो सेठी से माने जो माने तार निजर पाखरे थांती तांको सहित जते क्लोज थाए बट अदर इंडिविजुअल को से अदरली देखे तो से माने सेतल को फील करे जे आई एम एन इंडिविजुअल तो पूरा कंप्लीटली फील न हेले भी द चाइल्ड रियलाइज दैट अदर पीपल आर सेपरेट फ्रॉम देम तार जो ग्रुप बा तार जो सराउंडिंग रे जो माने अछि तांको से डिफरेंट बोली आइडेंटिफाई करे एंड डिफर्ड इमिटेशन करबा स्टार्ट करे एंड रिप्रेजेंटेशनल प्ले तो आमे जते आइडेंटिफाई करंती सेही स्टेज रे से माने सेही भलिया प्ले तांकर देखा जाय जेमिति कि आमे कथा कहले से माने हसंती बा आमे गुटे कोन गुटे तांको एटीट्यूड बा आमे कोन बळे गुटे एक्शन कले से माने हमको देखंती बा आमो से रिकॉग्नाइज करंती हमको तो से बळे रिप्रेजेंटेशनल प्ले मध्ये से स्टेज रे आमे देखिबा पई पाइबा एंड दे रिलेट टू emergence of the general symbolic functions which is the capacity to represent the world mentally तो से सेते बळे जनरल सिंबॉलिक फंक्शन स्टार्ट हुए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट सेंसरी मोटर स्टेज रे जनरल सिंबॉलिक फंक्शन स्टार्ट हुए रिमेंबर दैट कांसेप्ट दैट वर्ड एंड व्हिच इज कैपेसिटी टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड मेंटली तो मेंटल इमेज रे तार वर्ल्ड टा फॉर्मेशन करिया स्टार्ट करे मेंटल प्रोसेस रे जो वर्ल्ड को तार गुटे स्पेसिफिक इमेज दबा पई से चेष्टा करे and about the 8 months of infant will understand the preeminence of objects and that they will still exist even if they can't see them okay तो जो जिंस गुडा को से माने एक्वेंटेड ही जाई थांती जो ऑब्जेक्ट संगे तो से गुडा जदी पाखरे न थाई भी से मान को माइंड रे से ऑब्जेक्ट रो कांसेप्ट ता तयारी ही जाई थाए and that they cannot see them the infant will search for them when they disappear जतबे से ऑब्जेक्ट बा जे कोनोसी गुटे इंडिविजुअल होंतु से डिसअपियर ही जिवे किंतु तांको मेंटल प्रोसेस रे मेंटल एक्टिविटी रे से कांसेप्ट गुडा स्टोर हे कि रह जाय गुडा मैप क्रिएट कर देकी रखि थाए तो से जिंसु को से माने खोजिया पई चेष्टा करंती सो इट गुडे मो एग्जांपल थ्रो रे गुडे फिगर थ्रो रे हमें इटी टिके बुझिबा केमिति सेंसरी मोटर स्टेज रे तारो फंक्शन होउची तो आई ऑब्जेक्ट एंड हैंड तो एटी आई दैट इज एन सेंसरी ऑर्गन सिमिलरली हैंड इज ए सेंसरी ऑर्गन एंड ऑब्जेक्ट को टच करी की से फील करूची अबाउट द ऑब्जेक्ट आ ए ऑब्जेक्ट रो गुटे कांसेप्ट को त माइंड रे से गुटे इमेज फॉर्मेशन करूची थ्रू आई तो एठी देखिबा में एई स्टेज रे पिला माने जनरली एई एक्टिविटी करिवा कथा चिंता करंती बा करंती आई हैंड बा जो सेंसरी मोटर ऑर्गन जो गुटे सब रहिला ताकू यूज करी की से माने ऑब्जेक्ट गुडा को परसीव करंती आ तांग मेंटल इमेज रे से माने फॉर्मेशन करंती ओके सो दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ the first stage that is sensory motor stage वर्तमान से sensory motor stage रे आउ किछि कथा को हम डिस्कशन करिबा तो sensory motor stage have 6 sub stages okay तो कोन देखिबा the first one is stages of reflex activity stages of reflex activity जोटा कि 0 to 1 month भितरे चले that is inborn reflexes sucking looking जो बेस्ट फीडिंग ताकू कोनोसी केही भी न सिखैतले भी they should suck from the mother's breast milk जो फीडिंग करंती sucking तांको पाखरे that is the inborn capacity inborn reflexes सेउडा आसे and also looking से माने सराउंडिंग को जो देखंती that is a inborn quality or inborn activity जोटा कि तांको पाखरे ऑलरेडी हेई की थाए and helps the child to understand the surrounding नुवा जो परसेप्ट करबा एउठु स्टार्ट तांकर हुए then the next जो एठी गोटे फिगर रे आमे ताकू टिके मेंशन करिचन देखो तो एई जगह रे तमे देखिबो आ गोटे जनरल टेंडेंसी पिलांग पाखरे देखिबो ए स्टेज रे रिफ्लेक्स एक्टिविटी रे तमे आंगुलटे देखैले दे शुड होल्ड दैट फिंगर टाइटली ओके दैट इज द जनरल और इनबोर्न रिफ्लेक्सेस
which we found in case of every individuals, every infants. Okay. Then the next one is primary circular reactions. तो जोटा कि 1 to 4 month भितर आमे देखिबा पई पाइबा primary circular reactions, the second substage of sensorimotor stage. The sensation and schemas got coordinated. Sensations and schema, schema कोन आमे आगु गले डिस्कशन करिबा. एटा गोटे फॉर्मेशन मेंटल इमेज रो गोटे कांसेप्ट अछि. Get coordinated in this stage. Whatever children do in this stage, they tend to do it repeatedly as they derive pleasure from doing so. ओके जो जिनसटा से मानको प्लीजर प्रोवाइड करे जनरली सेही एक्टिविटी को से बारंबार बारंबार करिया पई चेष्टा करथि बा करथि. ओके फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड स्टार्ट सकिंग थंब, ही और सी विल कंटिन्यू विथ दिस एक्शन बिकॉज इट गिव्स द चाइल्ड सूथिंग फीलिंग. ओके तांको भल लागे सेते सेही स्टेज रे जो फिंगर को सकिंग करिबा बा गोटे पर्टिकुलर एक्टिविटी को जोटा कि से माने करी कि तांको प्लीजर मिलुची, दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी दे डू फ्रीक्वेंटली. ओके लाइक दिस. तो ये जो देखिबो जनरली किछि भी ऑब्जेक्ट तांको पाखरे पड़ी थाउ, आंगुली हो बा जनरली जे कोनोसी ऑब्जेक्ट भी तांको पाखरे थाउ, जनरली दे सक दैट ऑब्जेक्ट कारण से जिनसटा तांको जो सूदिंग फीलिंग्स आसे तांको पाख गुटे हेल्दी बा हैप्पी फीलिंग्स तांको भितरे क्रिएट करे. दैट इज कॉल्ड द सेकंड सबस्टेज प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन. Then the third one is secondary circular reaction that start from 4 months to 8 months. That is younger children become more focused on doing actions. Okay. तो जो younger children जितल तांकर डेवलपमेंट होबा स्टार्ट ही जाय हुए तो सेते बेले मोर फोकस्ड होंती से माने दे रिपीट देयर एक्शंस टू गेट रेस्पॉन्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. और बारंबार 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 से माने एनवायरनमेंट रु रेस्पॉन्स पाइबा पई चिंता चेष्टा करंती एंड फॉर दैट रीजन दे डू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. ओके तो ए भलिया किछि हमें एक्टिविटीज देखिबा पिलांक पाखरे जोठी कि सेमाने जो खेलिबा ए सब जो एटीट्यूड तांक पाखरे थाय से भलिया एटीट्यूड धीरे धीरे तांक पाखरे डेवलपमेंट हुए. देन द फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन जोटा कि 8 इयर्स रु स्टार्ट हुए 12 मंथ पर्यंत 8 मंथ रु 12 मंथ पर्यंत हुए. एंड इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न्स टू मेक ए डिफरेंस बिटवीन गोल एंड मीन्स. एटी तांकर कोऑर्डिनेशन होबा स्टार्ट हुए गोल एंड मीन्स. आमको गुटे काम दिया जाइछि दैट इज आवर गोल and how we fulfill or how we achieve that goal, that is our means. So at that stage they started such type of concept within them. Okay, and they also develop ways to achieve their goals. They also try to generalize the learning and try to use from the other one situation to other. Okay, so at that stage they try to generalize the concept. गोटे पर्टिकुलर जिनस को देखिला परे सेम टाइप रो जदी अलग जिनस देखुचंती दे शुड रिकॉग्नाइज दिस थिंग्स इजीली. That is called generalization process. And similar way रे they should try to use from the one situation to another. गोटे सिचुएशन को आ गोटे सिचुएशन को कोरिलेट करिबा कोऑर्डिनेट करिबा ए सब कथा तांको पाखरे डेवलपमेंट हुए. तो ए बेले सेही स्टेज रे देखिबो जेहेतु कोऑर्डिनेशन रिएक्शन थाए at that stage we found the students are very interested towards the different type of games and plays. Okay, तो सेही स्टेज रे ए भलिया कथा तमे पाई परिबो. Then the next one is tertiary circular reactions at that जोटा कि 12 month ru 18 month पर्यंत चले. This is a stage of trial and error. तो एई जगह रे पिला ट्रायल करे आउ मिस्टेक्स रु सीखे आउ पुनी थोरे ट्रायल करे. That process was started from that stage. And children explore the things around them. They make mistakes and also tend to repeat these mistakes. Mistake करियो बारंबार बारंबार से रिपीट मिस्टेक्स गुडा को बारंबार रिपीट करिया कथा चिंता करे. And this stage is very important as the child learn to be confident in this particular stage. Okay, and they repeat many actions because they want to attention from their caregiver. तो जे कहीं की ए भले एक्टिविटीज से माने जनरली करंती because they need or they want attention from the caregiver like mother and other elders who take care of the individuals. तो सेही मान को पाखरु टिके attention अधिका पाइबा पई they should do different type of activities. ओके लाइक विभिन्न प्रकार गेम्स को खेलिबा जो नुआ नुआ एक्सपेरिमेंट करिबा छोट छोट एक्सपेरिमेंट माने आमे कहूनु जे बड़ बड़ एक्सपेरिमेंट कथा छोट छोट एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करिबा ए बळे विभिन्न प्रकार एटीट्यूड आमे तांको पाखरे सेही टाइम रे देखिबा. देन द नेक्स्ट वन इज अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट. ओके द लास्ट स्टेज दैट इज अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट जोटा कि 18 मंथ टू 24 मंथ पर्यंत चले. एंड चिल्ड्रन स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन मेंटल एक्टिविटीज.
rather than physical actions. At that stage we found the individuals do more mental activity than the physical actions and start thinking about the object and also start thinking about the object. At this stage they show the ability to recognize object preeminence. तो यही जगह ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करिबा ऑब्जेक्ट रो इमेज को मेंटली स्टोर करिबा ए सब कथा ए स्टेज रे स्टार्ट हुए. दे सर्च फॉर द टॉयज इवन इफ इट इज नॉट इन देयर साइट. ओके जदि तांकर जो खेलना फेवरेट जो टॉयज थिबो जदि तांकर पाखरे नथिबो तो से माने खोजंती. ओके तो एई भलिया जो काई खोजंती ना कारण से टॉय रो मेंटल इमेज तांको माइंड रे क्रिएट ही जाय थाय. ड्यू टू दैट दे फाइंड द टॉयज व्हिच आर present not present in their sight. तो से स्टेज रे भी पिला माने देखिबो तमे जो बेसिकली दे वांट टू और दे लव टू प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स आ अदर एल्डर्स मान को सहित भी से माने सी टाइम रे खेलिया पे भल पांती विभिन्न ऑब्जेक्ट को नेकी. सो दीज आर द बेसिक और 6 सब स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. The second stage, that is pre-operational stage. Pre-operational stage. Operational fully function जोटा होची सेटा that is operational stage. Just ता पूर्वरु जो stage ता थाय that is called pre-operational stage. Okay. तो एग्जांपल को हमें जिबा तो ता पूर्वरु कोउ एज रे that start हुए ना एजेस 2 to 7 years रे सेही pre-operational stage ता रुहे. 2 to 7 years जोटा की प्री स्कूलिंग स्टेज भी हमें कहि परिबा. से जो स्टेज ता दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज. एई जगह रे ऑपरेशन ता कंक्रीट हे न थाय हुए. ओके तो जो आमे काम करूचंती डेली लाइफ एक्टिविटीज जहा जहा करूचंती जो आमे कंक्रीट प्रोसेस रे करूचंती जो आमे सिस्टमैटिक प्रोसेस रे करूचंती सिस्टमैटिक प्रोसेस वाज स्टार्टेड फ्रॉम दैट स्टेज. The pre-operational stage is one of the Piaget's intellectual development stage. Okay, at that stage we found intellectual development. The before that stage, generally intellectual development are not identifiable. But here at that stage, we found the intellectual development are occurs. At the beginning of this stage, the child does not use operations, so that thinking is influenced by the way things appear rather than logical reasoning. जो जिनसटा तांको आगे appear होची ताकू, and sometimes they also use the logical reasoning process to think differently. A child cannot conserve, which means that the child does not understand the quantity remains in the same even if the appearance changes. Okay, तो appearance को से माने सेतले आइडेंटिफाई करिया माने टिके कष्ट हुए सेते बेले, बट धीरे धीरे लेटर स्टेज रे सिसु जिंस तांको पाखरे डेवलपमेंट हे जाय. जेमिति कि हमें गोटे ग्लास रे पानी रखिचंदी तो केते पानी रखिचंदी दे शुड नॉट आइडेंटिफाई. कारण तमे जो स्टेज रे एबे जो स्टेज रे हमें अछंती गोटे ग्लास रे हमु केते पानी दिया हेची रखा हेची हमें देखिदेलु किछि समय पर पुणी पचराबो केते पानी थिला. तो से जो क्वांटिटी एई सब कथा बाबद रे समान को पाखरे टिके प्रॉब्लम क्रिएट हुए बुझिबार. फर्दरमोर द चाइल्ड इज इगोसेंट्रिक. ओके द चाइल्ड्स आर इगोसेंट्रिक इन नेचर. कांसेप्ट मन रखिबो कोन स्टेज रे पिला इगोसेंट्रिक थांती ना प्री ऑपरेशनल स्टेज रे. वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. Student individuals are egocentric at pre-operational stage. कौन ना he assume that other people see the world as he does. Okay, that means मु जेमिति egocentric, that means मो निजो को बेसी मु आइडेंटिफाई बा मो निजो कथा को बेसी फोकस करिवि. तो सही स्टेज रे individuals think the world which are present surrounding us. Okay, जोटा कि मु परसीव जेमिति करूची other individual are also perceive in the same way. That is called the concept of egocentric. तो से कतरा से कहूची he assumed that other people see the world as he does. This has been shown in the 3 mountain study. Okay, तो इस जिनसटा 3 mountain study रु जणा पडला. तो ए भलिया तांको पाखरे तमे एटीट्यूड देखिबो, ए भलिया तांको पाखरे बिहेवियर तमे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे देखिबो, तांको पाखरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुए धीरे धीरे आउ केमिति तांको पाखरे जो विभिन्न प्रकार चेंजेस आसुची से कथा मध्ये तमे आइडेंटिफाई करि परिबो. Now come to the basic characteristics of pre-operational stage. Okay, the toddlers or the young children acquires the ability to internally present the world through language and mental imaginary. Okay, तो ए स्टेज रे पिलांक पाखरे लैंग्वेज जेतु से माने कथा कहबा स्टार्ट करंती लैंग्वेज रे डेवलपमेंट हुए. And also we found the mental imaginary processes
or mental imaginary concepts are also developed within the individuals. तो जो कथा से कहू the ability to internally represent the world through language रे world को से मन represent करि पारंती, describe करि पारंती तांका surrounding को, and also they should create a mental image within the about the surrounding, about their environment, and also about their nature. Okay, so during this stage young children can think symbolically. तो इस स्टेज रे symbolically thinking आसे. Remember that concept, symbolically thinking. Pre-operational ले symbolical thinking आसिबो. This is the ability to make one thing such as the world or an object stands for something other than itself. Okay, तो एई जगह रे तांका पाखरे डेवलपमेंट हुए कोन ना डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज रो डेवलपमेंट हुए. जो डेवलपमेंट टा कोन करे ना मेक वन थिंग्स such as the word or an object stands for something other than itself. That means at that stage they identify the objects. For example, cow. तो गुटे cow concept को आमे देखिबा. तो ए स्टेज रे आमे जते बेले तांको आइडेंटिफाई करै कि देलु, जदि जानि पारले otherwise आमे तांको आइडेंटिफाई करै कि देलु that is a cow. तो ए जो cow रो इमेज ता तांको माइंड रे जो फॉर्मेशन होबा स्टार्ट हैला. तो काउज रो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को से माने इजीली आइडेंटिफाई करि पारले. एई कांसेप्ट गुडा से जगह रे स्टार्ट होबो. तो से माने जते बेले गोट को देखिबे तो ताकू से माने काउ कहिबे नाही, काहेकि ना से स्टेज रे तांकर डेवलपमेंट स्टार्ट हे जाय थाय जोथिरे कि से माने डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट कांसेप्ट को से माने डिफरेंटली आइडेंटिफाई करि पारंती. Then a child's thinking is dominated by how the world look. Okay, the child's thinking is dominated by how the world look. जेमिति world देखा होची सेही हिसाब रे world बोली से माने कंसीडर करंती, not how the world is. Okay, world कोन actually they have no perception about the particular world कोन केमिति डेवलप हेची कोन कथा से बाबदर तांको पाकर न थाय कथा बा से माने सेती कथा बुझी पारंती. बट से माने जो वर्ल्ड को देखुचंती सेही वर्ल्ड ता सेही भलिया बोली से माने तांको माइंड रे गुटे इमेज फॉर्मेशन करंती. And it is not yet capable of logical type of thought. तो इस स्टेज रे logical type of thought तांको पाखरे आसी बहुत कम आसी थाय, and problem solving ability भी सेमिति तांको पाखरे डेवलप हेई पारि न थाय. Moreover, the child has difficulties with class inclusion. He can classify objects but cannot include objects in subsets. Okay, that means if we consider cows, buffaloes, okay, so these are the similar type of animals and we place all these animals in a set. Okay, but at that stage these individuals cannot group similar type of animals, similar type of objects, similar type of concepts in a single frame. That is the difficulties at that stage we found within the individuals, and which involves classify objects as belonging to or more categories simultaneously. And infants at that stage also demonstrate animism. This is the tendency for the child to think that non-living objects such as toys have life and feel like persons. Okay, से माने देखिथिबो ए स्टेज रे पिला माने तांकर टॉल मान जो टॉयज थाए डॉल थाए तांको से माने खाइबा खुआंती, तांको से माने सुई दियंती, जेमिति कि मदर माने तांको चाइल्ड मान को जेमिति जो केयर नियंती जो भले एक्ट करंती सिमिलर वे रे infant are also do same type of things with their toys. Kaina they think these toys and these objects also have life. तो तांको भी से वाला ट्रीटमेंट से माने करंती ए स्टेज रे. Okay, then the next stage, that is concrete operational stage. तो आमे जानि परछन सिटी प्री ऑपरेशनल जस्ट प्रॉपर ऑपरेशनल स्टेज रे जस्ट पूर्वटा, एंड दैट स्टेज इज concrete operational stage. ए स्टेज रे जो हमर फिजिकल डेवलपमेंट ता प्रॉपर्ली हुए आमे विभिन्न एक्टिविटीज गुडा को कंक्रीट वे रे करि पारंती. तो दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम एज 7 to 11 years पर्यंत से एज ता चलिबो. By the beginning of the concrete operational stage, the child can use operations set of a logical rules, so he can conserve quantities. He realized that people see the world in a different way. किंतु आर स्टेज रे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हमें कोन पढुतलु सेठी जे
मु जेमिति देखुची बा से इन्फांट जेमिति ता वर्ल्ड को देखुची सी चिंता करे सी भाबे दैट इन्फांट थिंग all the individuals who are present in surrounding they also look the world in a same manner, but here in concrete operational stage एठी इंडिविजुअल टा आइडेंटिफाई करे मु जेमिति वर्ल्ड को देखुची अदर आउ जने इंडिविजुअल सेमिति से वर्ल्ड को देखु नाही तो से कथा से कहूची he realized that people see the world in a different way than he does and he has improved in inclusion task. Children still have difficulties with abstract thinking. ए स्टेज पर्यंत भी जो पिलांकर जो abstraction concept आसे abstract thinking आसे सेटा properly develop हेई पारि न थाए. So what are the major characteristics of that stage? During this stage children begins to think logically but concrete events about concrete events. Okay, जो abstract concept उपरे समानकर thinking टा जाई पारि न थाए, but at that stage these individuals think concrete events about concrete events जो जिनसटा फिजिकली प्रेजेंट अछि जो जिनस को से माने देखि परचंती परसीव करि परचंती जो जिनसटा को ऑब्जेक्ट को से माने टच करि परचंती फील करि परचंती about that object about that concept these individuals can think logical manner. तो सेहित पय देखिबो ए स्टेज रे जो क्लास बा जो पिला माने 7 to 11 इयर्स रे थांती जो एजुकेशनल प्रोसेस रे थांती से माने कोठी थांती ना प्राइमरी स्टेज रे बेसिकली थांती primary stage re thanti. So at that stage the things which are present in our curriculum all are based on the concrete objects or concrete events जो जिनस गुडा हम सराउंडिंग रे पाउचंती सेही कथा को हम एजुकेशन प्रोसेस रे रखाई छि काहे कि रखाई छि ना अकॉर्डिंग टू द characteristics of that particular stage. And children begin to understand the concept of conservations, understanding that although things may change in appearances certain properties remains the same. तो जदि चेंजेस आसुची तांका अपीयरेंस रे चेंजेस आसुची तो से चेंजेस रे जे माने टोटली से कांसेप्ट को चेंज कर देबे सेमित तांकर थिंकिंग आसे नाही. They also found the basic or the similar properties of different objects or events. The next one is that during this stage children can mentally reserve things, that is picture a ball of a plastician returning to the original shape. ओके से माने मने रखि पारंती ए जेमति एटी देखो ए सब जिंस गुडा को से माने देखि की विभिन्न प्रकार जो बिल्डिंग ब्लॉक्स को बा विभिन्न प्रकार कथा ए सब जिंस को से माने आइडेंटिफाई करी की ओरिजिनल शेप रे कोन थिला केमिति चेंजेस छी ए सब कथा को से माने सी स्टेज रे आइडेंटिफाई करि पारंती. एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन आल्सो बिकम लेस इगोसेंट्रिक हुए काहे ना से सेतळु चिंता करि दै छी जे मु जेमिति वर्ल्ड को देखुची ऑल द इंडिविजुअल्स आर नॉट seen the world in a same manner. Due to that, at that stage that individual become less egocentric and begin to think about how people might think and feel. How other individual mankar thinking, other individual mankar feelings ko madhya they should identify, they should recognize. So these are the basic and major characteristics of concrete operational stages. Then the next one is formal operational stage, the last stage of Piaget's cognitive development. So at that stage जेमिति आमे फिगर देखि परचंती जे विभिन्न प्रकार मैथमेटिकल कांसेप्ट को से करूची साइंटिफिक कांसेप्ट को करूची तो हियर लॉजिकल थिंकिंग आर डेवलप्ड एट दैट स्टेज एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 एज 12 आउ सेटा एडल्टहुड पर्यंत कंप्लीट चले. द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पीरियड बिगिन एट द अबाउट एज 11 as adolescents enter into the stage. Adolescents जेतोले एंटर करे से स्टेज रु फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट हो जाए. They gain the ability to think abstractly. तो ए स्टेज रु तांकर abstraction thinking आसे जोथि पई कि आमे कोन करू ना we also place some abstract subject and concept in our curriculum to teach these individuals, those who are present in formal operational stage. Then combine and classify items in a more sophisticated way and have the capacity for higher order reasoning. आउ ताका पाखरे कोन डेवलपमेंट हुए हायर ऑर्डर रीजनिंग रे कांसेप्ट डेवलपमेंट हुए से माने लॉजिकली थिंक करि पारंती. दे थिंक इन अ लॉजिकल मैनर. Then adolescent can think systematically and reason about what might be well as what is. Not everyone achieves this stage. Okay, this allows them to understand politics, ethics,
science fictions engage in the scientific reasoning. Okay, scientific reasoning, science fiction को एमाने बुझी पारंती. They should also like to see these things, understand these things, केमिति हला कौन हला ई सब जिंस को समान को पाखरे क्यूरियोसिटी आसे. And adolescents can deal with the abstract ideas also. That is, they can understand divisions and fractions without having to actually divide things up. Okay, कारण आमे जते फ्रैक्शन आमे तो फ्रैक्शनल कांसेप्ट पढौछु तो क्लास 3 4 रु तमरो आरंभ होई जाउची कोन ना फ्रैक्शनल कांसेप्ट. बट एट दैट स्टेज एट दैट क्लास आमे तो फ्रैक्शन कांसेप्ट पढौछु. जनरली वी टीच बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, फॉर एग्जांपल मुटे चॉकलेट टे नेली मते 2/3 नबार अछि तो मु चॉकलेट को 3 पार्ट कली सेतु 2 पार्ट नेली आ ऑब्जेक्ट को देखि की पिला को पाठटा को कोन करा जाय ना सिखा जाय. बट हियर एट दैट स्टेज ताको मेंटल प्रोसेस रे एब्स्ट्रैक्टली ए सब जिंसर डेवलपमेंट हे जाय. सॉल्व हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम आल्सो, इमेजिनरी प्रॉब्लम को से माने मध्ये डील करि परंती, आइडेंटिफाई करि परंती. देन कैरेक्टरिस्टिक्स को जिबा तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस कोन आसुची ना concrete operational stage are carried out on things whereas formal operations carried out on ideas. Concrete operational things based, particular based. Okay, जोटा कि हम रियल लाइफ सिचुएशन ले जो कथा अछि ताकू ही बेस करा जाय. बट एट द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल we focused on the ideas also. Formal operational thoughts is entirely freed from physical and perpetual constraints. Physical और perceptual constraint रू माने कौन गुटे मर्ज हुए, गुटे assimilate हुए. Okay, then new type of knowledge, new type of concept should be developed. And during this stage, adolescents can deal with abstract ideas, that is no longer needing to think about slicing of cakes or sharing of sweets to understand the division and fractions. But before that stage, when we try to understand about, when we try to teach about the fractions, divisions, we always provide the concrete examples. But here at that stage, there was no need of concrete examples. If we want to teach any type of concepts, we can teach by the help of abstract ideas. Then they can follow the form of an arguments without having to think in term of specific example. Without example le bhi ame concept tanku bujhei paranti. Then adolescents can deal with the hypothetical problem with many possible solutions. तो तांकु जतबे गोटे प्रॉब्लम दिया जाए, they think देखियो ए जो स्टेज रे बेसिकली प्रोजेक्ट रो कथा से प्रोजेक्ट टाइप ऑफ टीचिंग बा प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी रे पढेवा कांसेप्टटा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे बेसी यूज करा जाए. बिफोर दैट वी जनरली वी डू नॉट यूज द मेथड ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड. काहे ना प्रोजेक्ट बेस रे वी प्रोवाइड ए प्रॉब्लम and generally the individuals think about the different tentative solutions or hypothetical solutions, hypothesis about the problem. Okay, तापर से गोटे गोटे प्रॉब्लम जो आमे नहीं चंदी टेंटेटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं चंदी ताकू से एग्जामिन करे आ प्रॉपर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करे. ए स्टेज रे से जिंसडा हमें बहु मात्रा रे पाइबा. एंड फॉर एग्जांपल इफ आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ मनी वाज abolished in 1 hour's time, then they could speculate about many possible consequences. They think different type of consequences, different type of problems arise when the monies were abolished. Okay, ये सब कथा तांको पाखरे विभिन्न प्रकार लॉजिकल थिंकिंग भी एठी डेवलप हो जाए. Okay, then the next part of the concept, तो आमे जति की पढिले जो डिफरेंट स्टेजेस रे डिफरेंट टाइप रो डेवलपमेंट कथा पढिले, किंतु गोटे पिला तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट केमिति होउची आमे एई पॉइंट केते गुडा पॉइंट एबे डिस्कशन करिवा. एंड आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द कॉग्निटिव डेवलपमेंटल प्रोसेसेस आर ऑकर्स विद इन द इंडिविजुअल्स केमिति होउची देखिबा. सो इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट Piaget डिड नॉट व्यू चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस. तो केबे भी ये क्वांटिटेटिव प्रोसेस रे चाइल्ड रो चिल्ड्रन रो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होउची बोली से कथा देखि नथिले. दैट इज किड्स डू नॉट just add more information and knowledge to their existing knowledge as they get older. Okay, then instead तो Piaget कौन चिंता कले? Piaget suggested that there is an qualitative changes in how children think as they gradually process through their 4 stages. जते बेले
क्वांटिटेटिवली आम कथा गुड़ा को डेवलपमेंट को मेजर करिपरिबा नाही बट व्हेन एन इंडिविजुअल ग्रोज व्हेन एन इंडिविजुअल पासेस 4 स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ जोटा कि पीएच डिफाइन करथिले ऑटोमेटिकली वी फाउंड इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस at age of 7 children do not just have more information about the world than they did at age 2 there is a fundamental changes in how they think about the world okay so different type of fundamental changes are also found within the individuals so Piaget suggested several factors that influence how children learn and grows तो को factor influence करे वर्तमान ताको डिस्कशन करिया The first factor is schema. Most important concept, very important, that is schema. A schema describes both the mental and physical actions involving an understanding and knowing. ଗୋଟେ particular concept, ଗୋଟେ particular object को बुझिबा, ताकू remember करिबा, recall करिबा पाई, जो process हम use करनी, that process is known as mental and physical process action जोटा use करनी, that both actions are come under schema and schema are categorizes of knowledges that helps us to interpret and understand the world au schema that is a total mental activity जोटा कि हम mental process रे होउची हम mentally schema रे सब जिंस स्टोर हेगी रहउची विभिन्न ऑब्जेक्ट हो विभिन्न एनिमल्स होंतु विभिन्न प्रकार कथा कांसेप्ट सब कथा हम ब्रेन रे इन फॉर्म ऑफ schema स्टोर हेगी रहउची ठीक अछि आउ सेही जो स्टोर हेगी रहिला that is very helpful for the individual to understand the world okay कारण तार से mental activity रे से कोन करिवो ता जोडा स्टोर हेकी अछि ताको डिफरेंट वे रे इंटरप्रेट करिवो इंटरप्रेट करिकि they should understand the world which that individual have and in Piaget's view a schema includes both a category of knowledge and the process of obtaining the knowledge okay विभिन्न प्रकार knowledge the category of knowledge आउ केमिति से process of obtaining that knowledge the knowledge को use केमिति करिवो utilize केमिति करिवो को जागा रे करिवो से concept मध्य schema रे थाए and as experience happen this new information is used to modify add to or change previously existing schema और schema is not a static concept जोटा कि हमें कहि देले जे schema हैला रहिला बहुत दिन पर्यंत चलिबो सेमिति नो schema always a changeable process that is तमे नुवा नुवा कथा जतबेले तम schema रे ऐड करिवो ओल्ड स्कीमा रे जो कथा थिला सेगुडा सब रिकंस्ट्रक्ट हबो रिफॉर्म हबो ओके तो एटु गुटे एग्जांपल देखिबा हमें केमिति स्कीमा डेवलपमेंट होउची तो एटु गुटे गर्ल्स इंडिविजुअल टे अछि तो ताकू गुटे डॉग टे देखा गला तो ताकू आइडेंटिफाई करै कि दिया गला दैट इज ए डॉगी ओके दैट इज ए डॉगी तो सी परसीव कला कोन परसीव कला ना गुटे एनिमल तार 4 लेग्स अछि गुटे टेल अच्छी एंड तार 4 अच्छी ओके 4 जोटा कि माने जो रोमो अच्छी तो ताको से आइडेंटिफाई कला दैट इज डॉगी ठीक अच्छी बट अगेन जतबेले सी गुटे कैट को देखिला एटा कैट तो जतबेले से कैट को देखिला कैट रो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक से पाइला जे 4 लेग्स आ गुटे टेल अच्छी आ जो तार भी 4 अच्छी तो से तले देखिला तार जो मेंटल प्रोसेस रे ता स्कीमा रे एट जो आमे ताको आइडेंटिफाई करके देइथुनु ता स्कीमा रे थिला दैट इज ए डॉगी एई कांसेप्ट से सेटी यूज करिवो सी कैट को वर्तमान डॉगी कहइबो कारण ता स्कीमा रे डॉगी रो फिगर अछि डॉगी रो गुटे जो कोन गुटे एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट जोटा कि ता माइंड रे सेटा क्रिएट हेकी अछि किंतु जतबेले ताकू आउथरे अगेन वी आइडेंटिफाई और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड और वी प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस अबाउट डॉग एंड कैट तो से जगह तार स्कीमा कौन करिवो ना से जगह ता प्रीवियस एक्जिस्टिंग स्कीमा रेक्टिफाई होबो रिफॉर्म होबो तो से दीटा कैटेगरी रो एनिमल्स को आइडेंटिफाई कला दैट मींस दैट इंडिविजुअल डेवलप टू स्कीमा विद इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल तो ता माइंड रे दी प्रकार स्कीमा रो कांसेप्ट ता पाखरे डेवलपमेंट हैला ओके तो आई थिंक अंडरस्टैंड तो जो कथा से लिखिला फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड मे हैव ए स्कीमा अबाउट ए टाइप ऑफ एनिमल्स सच एज ए डॉग if the child sole experience has been with the small dog a child might believe that all dogs are small furry and have 4 legs suppose that the child encounters an enormous dog the child will take
in this new information, modifying that previously existing schema to include these new observations. Okay, बहुत बड़ कुकुर भी अच्छा छोट कुकुर भी अच्छा जदि छोट कुकुर सहित प्रथम एक्वेंटेड होता माइंड रे गोटे स्कीमा क्रिएट हो कौन ना ऑल डॉग्स आर स्मॉल जो बड़ डॉग देखला पुणी तार मॉडिफाई हम ता माइंड रे स्कीमा मॉडिफाई हम दैट इज आल्सो ए डॉग तो ये जो मॉडिफिकेशन टा इस स्कीमा रे हमें पाइबा सो दीज आर द कांसेप्ट ऑफ स्कीमा वेरी इंपोर्टेंट ताको टिके हमें बुझिबा देन द नेक्स्ट one is assimilation. The process of taking new information into our existing schema is known as assimilation. Okay, जो existing schema हम पाखे अच्छी से नुआ information आमे जितने बाहर करूँगी से new information concept को आमे assimilation बोली कहूँगी. We assimilate our previous concept with the new one. The process is somewhat subjective because we tend to modify experiences and information slightly to fit in with our pre-existing belief. Okay. For example, seeing a dog and labeling it dog in case of assimilating the animals into the child's dog schema. कौन होउची ये एग्जांपल देला आउट के तमे क्लैरिफाई हे परिबो तो से प्रथम देखिला कोन ना सो दिस फोर लेग्ड एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम तो से देखिला एटा त स्कीमा रे रहिला स्कीमा call her four legged pet doggy. Okay, तो जतबेले से कैट को देखिला सॉरी द चाइल्ड विल कॉल दिस ए डॉगी सेतबेले एसिमिलेट कला ता ना को सहित से एसिमिलेट कला जत नुआ डॉगी को देखिला आ गोटे कोन एनिमल को देखिला से सडन ताको एसिमिलेट करिवो जे तार जो प्रीवियस पास्ट नॉलेज पास्ट एक्सपीरियंस थिला तक सेटा को से यूज करियो प्रेजेंट गोटे कांसेप्ट को देखिकी ताको आइडेंटिफाई करिवो बा ताको गोटे कोन गोटे से ना रे डाकिवो तो ए जो एसिमिलेशन past को present सहित जो assimilation process that is another very important point of the Piaget cognitive development. Then the next point is accommodation. Another part of adaptation is the ability to change existing schema in light of new information. तो आमे देखिले डॉग आगु से देखितिला बा नुआ देखिला विभिन्न जो कलर हो विभिन्न टाइप रो होंतु विभिन्न ब्रीड रे होंतु तो सी सेटी एसिमिलेट कला ठीक अछि बट जतले सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रो अदर एनिमल्स को देखिबो आ जतबेला सी आइडेंटिफाई करिवो द डिफरेंसेस एक्जिस्टिंग स्कीमा को यूज करी की नुआ एनिमल को देखिला पर जो डिफरेंसेस को सी आइडेंटिफाई करिवो एंड गेट द न्यू नॉलेज और गेट द न्यू स्कीमास at that time we found another processes are occur within the human intellect that is called accommodations. New schemas may also be developed during this process. तो गुटे गोट बा गुटे कैट एवले एनिमल को देखिला परे से सेपरेशन कला माने जो तार डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करी गुटे न्यू स्कीमा ता माइंड रे फॉर्मेशन कला तो देखिबा सेही कथाटा को केमिति हम टिके बुझिबा So the four-legged animals for the first time. Child call her four-legged pet doggy. काहे से डॉगी रो ता स्कीम ता माइंड रे ता जो स्कीमा रे अछि कोन फोर लेग थिबो टेल थिबो तो ताको हमें डॉग बोली कहिबा डॉगी बोली कहिबा but the child called the new animal doggy and the mommy told her it is a cow जतबेले ता मा ताकू कहले ना that is not a doggy that is a cow तो सेतबेले ता पाखरे आउट मेंटल प्रोसेस नुआ कांसेप्ट डेवलपमेंट हला जे फोर लेग हेइथिले भी अदर एनिमल्स अछंती बा अदर एनिमल्स आल्सो हैव फोर लेग्स ए भलिया स्कीमा ता माइंड रे कंस्ट्रक्ट हबो तो एठी एग्जांपल अछि टिके पढी परिबो देखि परिबो ता बाबद रे क्लियर डिस्क्रिप्शन हेछि देन द नेक्स्ट पॉइंट द लास्ट वन इज इक्विलिब्रेशन द चाइल्ड प्रोग्रेस थ्रू द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट it is important to maintain a balance between applying previous knowledge that is assimilation and changing behavior to account for the new knowledge that is accommodations जो previous जो past knowledge हम पाखरे अछि जोटा को हम assimilate करि रखि छंती ओके ता सहित जो नुआ knowledge new knowledge को हम accommodate कले ता भितर जो balance maintain करिबा balance कोन सेंस रे हम देखिबा ना differences and similarities ओके तो जो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को नहीं कि जो बैलेंस मेंटेन हमें करंती कहा का संगरे एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशंस दैट कांसेप्ट इज नोन एज
equilibration. And for the development of mental activity or cognitive development, equilibration is a very important function and process जोटा कि जो आमर फोर जो आमर चार्टा कथा को वर्तमान आम डिफरेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्कशन कर इम्पोर्टेंट. तो Piaget believed that all children try to strike a balance between assimilation and accommodation using a mechanism called equilibration. Equilibration helps explain how children can move from one stage of thought to the next. गोटे स्टेज रु आउ गोटे स्टेज को केमिति जिवे दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन. तो ये गोटे कांसेप्ट देला जे इक्विलिब्रेशन एंड एकोमोडेशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कोन करिक रखिछि ना बैलेंस करिक रखिछि. तो मन रखिबा the process of equilibration is always maintain balance between assimilation and accommodation. Incorporate into an existing schema. नुआ existing schema रे ताको केमिति फंक्शन करू सेटा अछि आउ नुआ कथा को जतले हम स्कीमा न्यू स्कीमा को जतले ऐड करूची हम माइंड रे मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रायर स्कीमा केमिति होउची ई कथा दीटा भितरे जे बैलेंस मेंटेन करिक रखे दैट कांसेप्ट इज नोन एज इक्विलिब्रेशन. Then the last part of that class, that is educational implication of Piaget theory. Piaget's concept is the development process of understanding the working of the child's mind and be helpful to those who are involved in teaching and other educational practices. Because when as a teacher we teach or we try to teach our individuals or students at that time, the first thing is we must understand the individuals. Okay. तो आमे जो 4 स्टेजेस कथा दिया गला बा स्कीमा हो एकोमोडेशन एसिमिलेशन हो एकोमोडेशंस हो बा इक्विलिब्रेशन हो जो कंडीशन ले पिलार गुटे डेवलपमेंट होउची जदि गुटे टीचर आइडेंटिफाई कला बा गुटे टीचर जदि ता बाबदरे नॉलेज गेन कला देन इजीली दैट इंडिविजुअल बा द टीचर कैन यूज दीज कांसेप्ट्स इन द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. एंड he says that children pass through number of stages before the age of 14 years 14 वर्ष पूर्व विभिन्न स्टेजेस रे जाउची एंड लॉट ऑफ केयर शुड बी टेकन द चाइल्ड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो जेहेतु आमे वी हैव एज ए टीचर हु एज ए एल्डर हु इफ वी हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ देन दैट इज इजियर फॉर द adult individual to take care their younger ones. Then most of the teachers are now in agreement with him that is the waste of time to take those things to children which cannot be experienced through the sense organ. जोटा तांको पाखरे दरकार नै से जिंसु को नेले वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी. तेणु आमे से सब जिंसु को आइडेंटिफाई करि परबे इजीली जेहेतु आम पाखरे जो विभिन्न स्टेजेस रो नॉलेज अछि. Then when the children from many direct experiences then they are in a positions to understand abstract ideas and concept. जेहेतु experiment जो experience that is a very vital factor for the learning process. Due to that we only focus on the abstract development of different abstract concept and different abstract ideas. या ऊपर बेसी फोकस कले पिरा डेवलपमेंट ही परियो बोली Piaget को कांसेप्ट हम बुझिलु. And Piaget does not like to look at education, therefore the teacher must always make an effort to orient education around the child. Education को से बेसी फोकस करनु थिले सेहिति पई केमिति आमे गोटे इंडिविजुअल रो चारिपटे जो एजुकेशनल प्रोसेस अछि ताको आइडेंटिफाई करिकि पिलांकु हेल्प करिबा पिलांकु जो आमे फैसिलिटेट करिबा सेही ऊपरे Piaget रो कांसेप्ट रहिला. The most important function of the school is to provide good stimulating environment within the school for the proper development and their mental abilities. For the proper development of their mental abilities as a teacher, our responsibility in our school process, we provide such type of good stimulating environment to the individual जोठी कि तांकर own process रे जो constructivism process रे तांकर development होबो. And the school should provide good library opportunity for free discussion and community services. कारण निजे जतले जते तांकर जो कोन सोसिएबल एक्टिविटीज होबो डेवलपमेंट सेते क्विक ऑफ जो रैपिड हे परियो बोली तांकर प्रोसेस रे कुआ गला. And the need of the adolescent should be given a proper place on the school curriculum. Need of the adolescents because that is a period of stress on strain. आउ जेहेतु ए स्टेज रे एब्स्ट्रैक्शन रो कांसेप्ट बेसिकली डेवलपमेंट हुए. Due to that we always
माने importantly focus on the curriculum which are related or which are meant for the adolescents. Okay, so these are all about different educational implication of Piaget's cognitive development theory. Thanks for watching. तो आमे आहुरी नुआ नुआ वीडियो आनिबा जो थिरे आमे आउ किछि नुआ कांसेप्ट को डिस्कशन करिबा. Thank you to all.